हेलो गाइस। आज मैं थोड़े से मैकेनिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। एक सॉम से एक क्वेश्चन पूछते हैं, सॉम और एमडी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि हाउ डू वी डिजाइन रोटेटिंग शाफ्ट फॉर इनफाइनाइट लाइफ। ओके, सो based on this question there are many questions which may be asked in interview. So these are like, what is fatigue load, what is endurance limit, region of fatigue failure, SN curve, and why we draw SN curve on a lobe curve. Okay, there is significance of 10 power 6 cycle, okay, number of cycle. And then it stresses life method, only method to predict the life. Actually there are other methods also to predict the life in terms of n number of cycle. Okay, so we will discuss about those methods also, and why this SN method is most used among these other methods, and what happens to SN curve for materials like aluminium, and what if the material is brittle or ductile. So we will discuss all these things. Okay, so let's start. Let's put this image to the side. Okay, so first question is, how do we design rotating shaft for infinite life? So you must be aware of the concept of endurance stress, and we use endurance stress. It is used as a permissible stress limit, and shaft is designed considering fatigue loading condition, and dimensions are kept like so. If this is a shaft, so we choose dimensions in such a way that stress do not cross the endurance limit. There is a term called endurance limit. So the stress in this shaft should not cross this limit for infinite life. Okay, so when you answer this question and you introduce new term endurance limit, so new question comes, what is endurance limit, or maybe the what is fatigue load. So you must know the definition of fatigue load. Fatigue load क्या है? So when load changes its direction or magnitude, this is known as fatigue load. So this is simple. Okay, now third question is, what is endurance limit. So एक कॉन्सेप्ट होता है कि फटीग लिमिट, पहले तो फटीग लिमिट और एंडोरेंस लिमिट दोनों सेम होता है. ओके, एंड दिस फटीग लिमिट इज द स्ट्रेस लेवल below which an infinite number of loading cycles can be applied to a material without causing failure, fatigue failure. Okay, तो पहले फटीग लोड का तो पता चल ही गया. फटीग लोड में क्या होता है कि डायरेक्शन of force, like this is direction and magnitude both changes, direction and magnitude changes, then these loads are known as fatigue load. अब fatigue load में क्या है, क्या if we have to design our shaft for infinite life, then if the stress generated is less than permissible stress or endurance limit, then life will be infinite life. So this is the concept. And now the fourth question is, what is fatigue failure and the reasons for fatigue failure. Okay, so the
सो फटीग फेलियर का सिंपल डेफिनेशन होता है कि इट इज़ ड्यू टू क्रैक फॉर्मेशन एंड प्रोपगेशन. फटीग फेलियर इज ड्यू टू क्रैक फॉर्मेशन एंड प्रोपगेशन. और जो भी फटीग क्रैक होगा वो एक डिसकंटिन्यूटी होगा मटेरियल में. तो शाफ्ट में कोई डिसकंटिन्यूटी होगा मान लो, या फिर एरिया चेंज हो रहा है. दिस इज डिसकंटिन्यूटी. सो यहाँ पे क्रैक जनरेट होगा एंड दैट विल प्रोपोगेट इनसाइड द शाफ्ट एंड दैट इज द रीजन फॉर फटीग फेलियर. ओके, सो अब अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दीज discontinuities. So there are many reasons due to which these discontinuities arise in a shaft. So first one is change in cross section area. Change in cross section area. Okay. Second one is like कीवे हैं shaft में, कीवे हो गया, holes हो गया. Okay. और भी रीजन्स हो सकते हैं, जैसे बियरिंग्स में. बियरिंग में क्या होता है, कुछ हाई कांटेक्ट प्रेशर होते हैं, प्रेशर पॉइंट होते हैं, हाई प्रेशर पॉइंट हो सके. तो हाई प्रेशर पॉइंट्स हो गए, वहाँ वो डिसकंटिन्यूटी, तो वहाँ पे फटीग फेलियर होने की ज़्यादा चांसेस है. ओके, सो देयर आर मेनी रीजन्स फॉर फटीग फेलियर. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अब एसन कर्व की बात होगी कि एसन कर्व ड्रॉ करो. एसन कर्व ड्रॉ कर देना सिंपल सा. एसन कर्व ड्रॉ, नॉर्मली एसन कर्व क्या लोग कर्व पे होता है. ओके, सो ये हो गया एस स्ट्रेस और ये होगा फटीग स्ट्रेस, है ना. फटीग स्ट्रेस हो गया, इधर होगा लाइफ, नंबर ऑफ साइकिल्स के टर्म में. सो अपन अगर स्टील के केस में जो कर्व हो गया वो ऐसा आता है नॉर्मली, ये स्ट्रेट लाइन सा होगा. फिर आफ्टर सम number of after 10 power 6 number of cycles this becomes straight line. मीन्स अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेस होगा ना, तो इन दैट केस नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी इनफाइनाइट, फेल ही नहीं होगा. ये इसी लिमिटिंग स्ट्रेस को बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट. एंडोरेंस लिमिट, इससे नीचे जो भी स्ट्रेस होगा इन दैट केस द शाफ्ट विल नॉट फेल ड्यू टू फटीग लोडिंग. ओके, सो दिस इज. हाँ, एक और रीज़न आता है कि लो कर्व क्यों होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस कर्व इज लो कर्व. लो कर्व क्या होता है. लो कर्व का मेन रीज़न होता है, अगर आप इसको नॉर्मली नंबर ऑफ साइकिल एंड स्ट्रेस पे प्लॉट करोगे तो ये जो पीक आएगा ना, ऐसा पीक देखने को नहीं मिलता. सो दिस इज द रीज़न. एंड plotting this curve on log paper emphasize this band in the curve, and okay, so which might not be apparent in the normal curve, normal Cartesian curve. So this is the reason. Now next question comes. There is significance of 10 power 6 cycle. सो नॉर्मल क्या होता है कि स्टील और आयरन के केस में ये जो साइकिल होगी यहाँ पे टेन पावर 6 नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद में ये जो कर्व होगा ये हॉरिजॉन्टल बन जाता है. इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज द रीज़न व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट. और नॉर्मली क्या होता है कि स्टील एंड आयरन के केस में ये जो यहाँ पे जो पीक पॉइंट आएगा दैट विल कम अराउंड 10 पावर 6
to 10 power 7 cycles. Okay, so this is the reason. But in case of other materials like aluminium, or like if the material is in case of brittle or ductile material, this may not appear at this peak band. It will not appear at 10 power 6 or 10 power 7 cycles. Okay, so this is the reason. Now next point is, हाँ ये जो SN कर्व से अपन ने लाइफ डिसाइड करना है, is this the only method to predict the life? Actually not. There are other methods also. Like one is SN curve, which is very popular. Other methods are like strain life curve. Okay. And there are other methods also based on actual fatigue mechanics. There are other methods to determine the life, the predicted life of the shaft. Okay, but this SN method is very popular. Why? Because it is simple and easiest to implement for a wide range of design applications. Okay, so this is the reason why this SN method is most used, very popular. Okay, next question comes, will the SN curve be the same for all material like aluminium, brittle and ductile? No. Okay, ये कर्व चेंज होगा, लेकिन हाँ एक और चीज़, एल्यूमिनियम के तो केस में पीक भी नहीं आएगा. Like you see in case of steel, you see peak at 10 power 6, this band at 10 power 6. Okay, 10 power 6 number of cycles. But in case of aluminium, this curve will not be, this SN curve will never become horizontal. Okay, so there is no concept of endurance limit in case of aluminium. Okay, और हाँ एक और चीज़ की SN कर्व ब्रिटल के मटेरियल के केस में, डक्टाइल मटेरियल के केस में ज़्यादा चेंज होता नहीं है, मोर और लेस सेम. दिस SN कर्व रिमेन्स द सेम. ओके, सो ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे हैं. इनफाइनाइट लाइफ की शाफ्ट कैसे डिजाइन करें, फटीग लोड, इंड्योरेंस लिमिट, फटीग फेलियर, SN कर्व, व्हाई दिस SN कर्व इज ड्रॉ ऑन अ लो कर्व. Okay, then other methods of predicting the life